MongoDB database. Okay. Now, how many of you know about databases? Most of you are aware of databases, right? So, databases usually we use to store data permanently, right? Permanent storage. Usually, before database, you store the data in database, in a file. But in a file, data is not organized. It is stored in a textual format. Okay. So therefore, it is very difficult to search the data from the file, to get the required data from the file. So, okay, even a file provides very limited security, okay, to the data. So better than, if you want huge amount of data to be stored, again, file is not really a good solution, okay, and it becomes very difficult to query the data from the file. So then relational database came in market, okay. Using relational database, you can store the data in the form of rows and columns, means in tabular format. Right now, my friend, screen is not shared. Okay, we are just discussing. Okay, and here we'll be totally doing practicals only on MongoDB. So therefore, screen is not shared. Right now, we are just discussing about databases with different categories and not. So relational database, basically, it stores data in tabular format in the form of rows and columns. And every row has the same structure, correct? So whether you want data in some columns or don't want, but still complete structure for that row will be created. And the main advantage of relational database is SQL, structured query language, using which you can easily query the data from the relational database. Okay, even you can also create the relations between entities, means tables. Okay, using primary key and foreign key, especially foreign key constraints. So you can have the relationship between tables, one to one, one to many, many to many, correct? So like this. So therefore, relational database became very, very popular, and still today they are popular. Okay, there is no replacement to that. But then gradually, if you understood, with the increase of social media, then the data which was getting generated or which is being generated, okay, is now not having proper structure. It is in any structure. So then how to store the data? So it becomes very difficult to convert that data, which is social media data, into proper structure and then store in relational database. Correct? Because relational database is always structured database. It is always structured, means table, rows and columns. So whatever the data you want to store in relational database, you have to convert that into proper structure as per the table format, or whatever the table which you have designed or defined, and then you need to store. But then you understand today the explosion of social media, right? The kind of data which is being generated on social media is tremendous on daily basis, on minute basis, or on second basis. Tremendous data. So it's very difficult to convert that data, which is generated second by second tremendously in any format. Okay, and convert that data in proper structure and store in relational database. So here relational database cannot be used. Okay. Otherwise, you use relational database. Means if your data is structured format, proper structure is having, then relational database is always welcome. And they are still today used. But then if you talk about social media, the kind of data which is generated on social media, यानी कि कोई भी कुछ भी text डालता है, right? Image डालता है, video डालता है, तो ये भी data store करना पड़ता है. Okay, otherwise you cannot access that data. Means if there is no permanent storage, then you cannot access. So there is a permanent storage. So there is some solution required to store such a kind of data which is having not proper structure. Okay, so then non-relational database came in market, no SQL database. Okay, and MongoDB is one of those databases. So this is how MongoDB, Cassandra, like this, there are many such a no SQL databases. Okay, where no SQL means not only SQL, non-relational database. Or we can say non-structured. We will not say non-relational, but we will say semi-structured. Means structured vary होता है. Okay, record-wise structure different होता है. यानी कि एक record का structure एक होगा, दूसरे record का structure अलग होगा. But if you check in relational database, हर एक record का structure same होता है. यानी कि अगर आप कोई table बना रहे हैं, जैसे कि आप employee table बनाते हो, तो in employee table, every row has the same structure in relational database, like MySQL, Oracle SQL, PostgreSQL, okay, SQL Server. These are so many
examples of relational database management systems. Okay. And querying the data from relational database becomes very easy because of structured query language. Structured query language is very rich. So you go for a structured query language, then you go for PLSQL as well, SQL, PLSQL. But then by the time, as we are right now discussing, social media came in the market. Okay, initially social media was not so much popular when it was just started. But then today, if you check, everybody is using social media. Okay, right from business activities, or we can say school activities, everywhere social media is. WhatsApp is there. Okay, the school groups are there. Okay, employee groups are there. Okay, you can say social activity groups are there, and you can also create your own groups and you chat. Okay, over the social media, and not only WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter. These are tremendously used today, right? And the kind of data which is being generated is totally semi-structured, or we can say unstructured. Okay, यानी कि images है, videos है, text भी है, सब कुछ mix है, ऐसा कुछ proper structure नहीं है. So then, how we can do that? So with the help of semi-structured database, and MongoDB is a solution to that. I mean, no SQL databases are solution to that, and MongoDB is one of those. There are other databases also which are no SQL database like Cassandra, जो मैंने अभी बताया. लेकिन MongoDB is very popular because of its simplicity. So here we'll be learning MongoDB. So MongoDB, in which data is not stored in particular structure. Okay, every record can have different structure. So let me tell you basically some terminologies in MongoDB. In MongoDB, basically, we don't say record, we say document. So it is document-based database. Document, in the form of document database, data is stored. So document you can map like a record or row in a structured database. Means if you go for a structured relational database, so in that table has a row. Every row has the same structure. So here in MongoDB we have a document that you can treat as a record. Okay, but what is the difference between the relational record, okay, or the record in relational database and document in MongoDB? So every document can have different structure. Every document can have its own structure. Okay. Another technologies, usually you know that you just a minute. Let that announcement be completed. Okay, so what I was talking, so in MongoDB, data is always stored in the form of document, okay, and every document can have its own different structure. So therefore it is called semi-structured database. तो structure होता है, लेकिन हर एक record का structure अलग होता है. लेकिन हम MongoDB में उसको record नहीं बोलते, document बोलते हैं. Okay, so you can map document with the record or a row in a database, a relational database. Now, how to store the documents? Basically, we store documents. Can you tell me, we store rows in what? In relational database. Rows किसके अंदर होते हैं? In relational database. Rows are a part of. Relational database आता होगा ना? तो rows are always stored in. Hello. समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन?
इन रिलेशनल डेटाबेस, स्ट्रक्चर डेटाबेस, आप सारे रोज किसके अंदर स्टोर करते हो? रोज आर अ पार्ट ऑफ व्हाट? रिकॉर्ड्स और हाँ, टेबल सॉरी, टेबल, हाँ, करेक्ट. So all the rows you store in a table, right? Means table is a collection of rows and columns, correct? So similarly in MongoDB, suppose we say document is like a row and all the rows are stored in a table. So similarly in MongoDB, what is that? Is the table there or not? No, obviously not. Table तो उसमें rows and columns होते, तो अगर यहाँ rows ही नहीं है, तो obviously table भी नहीं है. So then all the documents which are related to each other, they are stored in a collection. They are stored in what? Collection. So collection in MongoDB is same like a table in a relational database or structured database. And document in a collection is like a row in a table. And if you have already the knowledge of structured database, relational database, तो आपको already मालूम है table होता है, database table होता है, फिर table के अंदर rows होते हैं. तो यहाँ वो नहीं होता. तो यहाँ टेबल को आप कलेक्शन बोलते हो, टेबल होता ही नहीं, ऐसा कुछ टेबल होता है नहीं, तो यहाँ कलेक्शन होता है. एंड कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं. सो डॉक्यूमेंट्स आर लाइक रोज, ओके, एंड कलेक्शन इज लाइक अ टेबल, जस्ट टू गिव आइडिया. एंड कलेक्शन डेटाबेस में होता है. कलेक्शन किस में होता है? डेटाबेस में. यानी कि व्हेनेवर, जैसे कि आप देखो स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस में, रिलेशनल डेटाबेस में आप पहले टेबल क्रिएट करते हो. क्या क्रिएट करते हो? टेबल. और टेबल के अंदर फिर रो इंसर्ट करते हो. सेम थिंग इज हियर इन MongoDB डेटाबेस. यू क्रिएट फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्शन. ओके, किसी आप कोई डेटाबेस बनाएंगे, आपका खुद का डेटाबेस, जैसे कि आप MySQL में डेटाबेस बनाते हैं, ओके, सैंपल, ओके, MyDB और व्हाटएवर. तो वैसे ही यहाँ पे MongoDB में आपको डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा. And in that you create a collection, and in that collection you start, okay, storing the documents, inserting the documents. Now let's talk about document. So as MongoDB is a NoSQL database, okay, semi-structured database. So let me tell you, in MongoDB, data is always stored in JSON format. Which format? JSON. So I think you already have the idea of JSON, JavaScript object notation. Okay, so in JSON, data is always stored in name and value pair. JSON format means name and value pair. Name must be string type, means surrounded by double quote. And value can be any type. Value can be number, boolean, okay, string, or it can be array. It can be nested document. Nested document. Value can be nested document. But all the keys, okay, must be of string type. So this is how we create a MongoDB document. It's very simple. So in MongoDB document always store data in a JSON format. Okay, तो actually internally वो BSON format होता है. JSON का मीनिंग है JavaScript object notation. BSON का मीनिंग होता है बाइनरीज, यानी कि मेमोरी में स्टोर होता है, तो इसलिए बाइनरी. तो BSON, तो बस J निकाल के B डाल दो, इट इज BSON फॉर्मेट. ओके, बाइनरी फॉर्मेट. ओके, बट बाइनरी JSON बोलते हैं हम इसको. सो BSON का फुल फॉर्म बाइनरी JSON ऐसा होना चाहिए. इट्स नॉट ओके कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होता है तो बाइनरी स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ऐसा नहीं करना चाहिए. इट्स अ बाइनरी JSON and where it is JSON format, key value pair. Okay, so let's see practically. So there are two ways to deal with MongoDB. One way you can deal online MongoDB database, which is available from the cloud. AWS पे create होता है वो, AWS cloud पे, sorry, AWS cloud. So you can, and you will get free access to the AWS cloud. Okay, तो MongoDB website जो है वो एक facility देता है. Okay, तो free database. And second thing is you can download the MongoDB server, okay, database on your machine and you can deal with that. तो हम पहले आपको क्लाउड बेस्ड डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं वो दिखाते. उसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ता है. तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन. बिफोर दैट माय फ्रेंड्स, एनी डाउट अबाउट दिस डिस्कशन? नो सर. तो उसके लिए मुझे ना एक स्टूडेंट की हेल्प लगेगी.
क्योंकि मैं रजिस्टर नहीं कर सकूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं रजिस्टर्ड यूजर हूँ। ओके, क्लाउड बेस। अगर मुझे सबको बताना है तो कोई एक स्टूडेंट स्क्रीन शेयर करो जो रजिस्टर्ड नहीं है ऑलरेडी MongoDB पे। ओके प्लीज, हु वांट्स टू डू, तो सो दैट आई कैन गाइड यू एंड अदर्स विल फॉलो। जो स्टूडेंट करेगा जिसको मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा वैसे बाकी के स्टूडेंट उनके मशीन पे फॉलो करना है। इंटरनेट लगेगा ओके क्लाउड बेस के लिए। क्या बात, नोबडी इंटरेस्टेड? तो फिर लर्निंग कैसे होगा? मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ, मैं कैसे फिर से रजिस्टर करके दिखाऊं? क्योंकि वो प्रोसेस है, आपको प्रॉपर बताना पड़ेगा और फिर बाकी के स्टूडेंट जिनको रजिस्टर करना है वो भी फॉलो करें। तो लाइव बता देता हूँ ना। आप डिसाइड करो एक दूसरे के साथ और फिर कोई तो है ना एक स्क्रीन शेयर करो। Shared service. Okay, Shreyas has shared and remaining student फॉलो करो। आपका कोई भी एक ब्राउजर ओपन करो श्रेयस। हाँ, यहाँ टाइप करो MongoDB Atlas। टाइप करो इधर सर्च में MongoDB Atlas। क्या हुआ? सॉरी, एक मिनट, अभी दिखाई दे रहा है एटलास। ये देखो, ये अदर्स पीपल आर दे फॉलोइंग? बाकी के लोग, आप जाग रहे हो क्या? MongoDB सीखना है कि नहीं? यस सर। सर पहले से रजिस्टर्ड है तो उसमें फिर क्या करना है? उसको कुछ जरूरत नहीं है। तूने कब MongoDB सीखा? नहीं सर, वो प्रोजेक्ट था ना मेरा, तो मैंने किया था। क्लाउड के ऊपर? हाँ ठीक है, फिर आपको इसकी जरूरत नहीं है। जिन्होंने नहीं किया, बाकी किसका किसका नहीं है रजिस्ट्रेशन? रेज योर हैंड। आरती मोळके, अजून एकच जण आहे आणि श्रेयस। बाकी सब लोग रजिस्टर्ड है क्या MongoDB पे? हेलो, Yes, sir. I have registered. कौन? किसने बोला? Myself, Ajit. अजित। हाँ अजित, यू ऑल रिपीटिंग द बैच, तो आप ऑलरेडी हो गए। Yeah. नहीं, ये मुस्तकीम है, ये नहीं बोल रहा है, राहुल नहीं बोल रहा है, इनका क्या है? स्पेशल इनविटेशन देना है। मैं सबको एड्रेस करता हूँ ना, तो आपसे रिस्पॉन्स आना चाहिए की बात। तो मैं जस्ट, मेरा एक नेचुरल क्वेरी है कि रजिस्टर्ड है क्या नहीं, क्योंकि कोई इंटरेस्टेड नहीं है इसमें। अरे मुस्तकीम का क्या है? ये है क्या मीटिंग में कि कुछ गड़बड़ है भाई? उधर मीटिंग में तो दिख रहा है। एनी प्रॉब्लम मुस्तकीम?
Respond. कुछ तो प्रॉब्लम है उसके साइड पे. फोन लगा रहा है क्या? लगा लगा फोन लगा उसको. फोन पे बिजी है. अभी पता चल जाएगा फोन पे कैसे बिजी है.